in order to grow in your career, there are the value of interpersonal skills. Absolutely. People generally believe that sales is like a specific profession. So जब एक डॉक्टर आपको वो दिलासा देता है, what does the doctor doing? Motivation is an action. You cannot act for others. Those who are well disciplined, they achieve the big heights. Broken English is the gateway for fluent English. Today, we are going to meet a person who is just not an author, an educator, business consultant, a successful entrepreneur. In fact, he is literally a human charger who has charged over 2 lakh students and professionals through his motivational training, seminar and workshops in various education institutions and organizations in Delhi, Haryana and Uttar Pradesh. सिर्फ इतना ही नहीं, आज ही हमारे स्पेशल गेस्ट ने हजारों लोगों को स्पोकन इंग्लिश और इंटरव्यू स्किल्स की सक्सेसफुल ट्रेनिंग भी दी है। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ट्रिक्स पर एक स्पेशल बुक द मास्टर की लिखी है। हिज सेकंड बुक मास्टर योर माइंड is about knowing the endless power our mind has and how can we use it for the betterment of the mankind. आज हम उनसे समझेंगे कि एक सक्सेसफुल करियर के सस्टेनेबल पिलर कौन कौन से हैं, how to stay motivated for a great career. Is it really so that communication skills is equal to good spoken English? ग्रामर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है और इनको इम्प्रूव कैसे किया जाए? Recruitment process in any company, how to introduce yourself, 3 golden rule of success in a job interview, how to overcome nervousness and stage fear, और लास्ट में हम जानेंगे कि जॉब सीकर्स के लिए उनके आगे के प्रोग्राम्स क्या हैं. So without wasting the time, let's welcome our special guest for today, the human charger, Mr. Gautam Bhartiya. So welcome sir to the Career Talk series of Career Jaano. Pleasure, sir. So without wasting the time, shall we start with the first question? Okay. Correct. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पिलर्स ऑन विच वन कैन बिल्ड अ सस्टेनेबल करियर? Right. When it comes to building a strong and sustainable career, I strongly believe one has to be good in the profession he has chosen. First, the expertise in your particular profession is the first and foremost requirement. That will give you a start in your career. But in order to grow in your career, there are the value of interpersonal skills. And when we talk about interpersonal skills, there are 3 major factors. The first, your ability to influence, ability to convince, and ability to sell. Until and unless you have these 3 abilities, you cannot grow. You know, your professional skills will decide when are you going to start with your career. But your interpersonal skills, your ability to influence, convince, and sell, they will decide how long or how big heights will you achieve in your career. Any profession, any industry, selling is required. Absolutely. People generally believe that sales is like a specific profession. But you know, sales is something when you put on your efforts for building up your career. I strongly believe that, once we talk about a doctor, you go to a doctor, the doctor doesn't talk you about the salt of the medicine and nothing. He gives you the faith that you will be recover pretty soon. हो जाओगे, ठीक हो जाओगे. ठीक हो जाएंगे आप, बिल्कुल. तो जब एक डॉक्टर आपको वो दिलासा देता है, what does the doctor doing? Selling the sales. This is the selling point. This is the selling point. Okay. वो कस्टमर बांध रहा है, देखा जाए तो. Right. So everyone has to be good in. देखिए, आप डॉक्टर कितना अच्छा है वो एक पॉइंट है, बट आपका कस्टमर के साथ वो कम्युनिकेशन कैसा, उसको इन्फ्लुएंस कितना कर रहे हैं, वो सेल्स के डायलॉग ही बोलते हैं. आप अल्टीमेटली कनेक्ट कर रहा है उसके साथ. एब्सोल्युटली. तो जिस तरीके से आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनका फेथ अर्न कर पा रहे हैं, और सेल्स का पॉइंट ही ये है, अर्निंग द फेथ. और डॉक्टर का एग्जांपल ले तो वो डॉक्टर हैं जो एक पेशेंट से स्टार्ट करते हैं और बाद में फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं. दैट्स व्हाई सो सेलिंग इज रिक्वायर्ड. इज absolutely compulsory for each and every profession, no matter what profession and industry. Any industry. Right, sir. So my second question is, what is the best way to stay motivated for a great career? Right. When I talk about motivation, first of all, we need to understand there are a whole lot of people who are saying like motivational speaker. They're good. But first of all, we need to understand what is motivation. I strongly believe nobody can motivate people. Okay. Reason being, motivation is an action. You cannot act for others. आप नहीं कर सकते बोला. So what can we do? We can inspire them. Inspiration is teaching. Inspiration is giving them the excitement to do something. Right. But that inspiration के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि that is a short term phenomena. Yes. हम मूवी देखते हैं किसी को 6 पैक्स ऐब है, वो जाकर के जिम तो ज्वाइन कर लेते हैं. But that is fade away very लिमिटेड टाइम तक इन्फ्लुएंस रहता है, जब उनको एक्चुअल में एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसके लिए. That fades away.
and they quit. So rather than staying motivated, I strongly believe that one has to stay disciplined. Disciplined. Absolutely. देखिए आप देखते हैं कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कितने लोग हैं, हर साल लाखों लोग हजारों लोग ट्राई करते हैं, और वो मोटिवेटेड थे एक टाइम पे, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से हर कोई नहीं जा पाता, मैनी ऑफ देम डाइड, बट कुछ बेस कैंप से वापस इस कैंप से वापस आ जाते हैं, बट दोज हु आर वेल डिसिप्लिन दे अचीव द बिग हाइट्स. Okay. सो रादर देन स्टेइंग मोटिवेटेड, आई वुड रेकमेंड दैट स्टे डिसिप्लिन्ड. दैट इज द बेस्ट वे. So discipline brings motivation. Motivation, absolutely, because once you stay disciplined, it will reflect in your results. Because you are consistent and you are disciplined, it will reflect in your results. And result is the biggest motivation, I believe. Result is the biggest. Once you get results, you tend to do little more. Yes. Tend to put little रिजल्ट आ रहे हैं और करते हैं. और करते हैं, बिल्कुल. करते हैं. जितना रिजल्ट दिखता है तो फिर अभी अब देखिए ना, YouTube चैनल पे कितने यूट्यूबर हैं, अब जब तक व्यूज नहीं आता वो उनकी कंसिस्टेंसी, और एक बार व्यूज आना शुरू हो जाए उसके बाद की कंसिस्टेंसी, Different दैट इज है. द प्रूफ कि रिजल्ट ही सबसे बड़ी मोटिवेशन, और रिजल्ट के लिए आपको मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है. Consistency and discipline. Consistency and discipline. So third question is it really so that communication skills are equal to good spoken English? क्या फिर कुछ और? Absolutely not. See, communication is a wider term. Spoken English is just a part of it. Okay. See, language, once we talk about English, it's just a medium of like conveying your thoughts and ideas. Communication is beyond that. It includes your body language, your voice, your tonality, your pitch, your intonation. In fact, the kind of thought you have. Until and unless you have rich thought process, how come you influence people with spoken English only? मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, they are good in English, but they don't have rich thought process. Okay. उनके विचारों में वो गहराई नहीं है. And until and unless you have that depth in your thoughts, you cannot influence people. Okay. So communication is a much wider term than just spoken English. और एक बड़ी आने ये है कि आज तक भी लोग समझते हैं कि अगर मेरी स्पोकन इंग्लिश एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए तो आई विल बी अ गुड कम्युनिकेटर, बट दैट इज नॉट अ केस. कई बार मैं अपने ट्रेनिंग्स को भी फन पार्ट पे बोलता हूँ कि आपको तो क्या बनना है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट, टीचर, लेकिन इस देश में एक आदमी अच्छी हिंदी को यूज करके अच्छी कम्युनिकेशन के साथ देश का प्रधानमंत्री बन गया. He hardly delivered any speech to the mass in English language. वो हिंदी में बात कर इवन तमिलनाडु में भी जाते हैं तब भी हिंदी में बात करते हैं, मणिपुर जा रहे हैं तब भी हिंदी में बात करते हैं. तो उन्होंने इंग्लिश का वो सहारा नहीं लिया. इवन ये तो इंडिया की बात है, अगर वो यूएस भी जाते हैं, यूके भी जाते हैं, वो हिंदी में डिलीवर करते हैं अपने भाषण. क्योंकि कोर ऑब्जेक्टिव हैज टू बी the connectivity with the Connectivity with the audience. So language is secondary. So communication is much wider term. तो आपके विचार, आपका the way you deliver, that is also equally important. And we can say that power of convincing someone is communication skill. Absolutely. Not only, see, once you influence people, then it becomes easy for you to convince. Okay. Right. Influencing and convincing are two different things. And influencing comes first. अब देखिए, जितने भी आपने देखा होगा कि मैं YouTube का फिर से एग्जांपल लेता हूँ, वो अपने आप को आजकल इन्फ्लुएंसर बोलते हैं. अब वो इन्फ्लुएंसर है तभी उनको एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, अब वो फिर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि बाय दिस प्रोडक्ट. वो एफिलिएट मार्केटिंग है, बाकी सब चीजें हैं, बट द वेरी फर्स्ट थिंग इज इन्फ्लुएंस, एंड देन ओनली कम्स द कन्विंसिंग. राइट. अगर किसी भी लैंग्वेज की बात करें, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी और एनी लैंग्वेज, ऐसा क्या करे कि पहली मीटिंग में सामने वाले पर कोई अपनी छाप छोड़ जाए अपनी कम्युनिकेशन स्किल से? इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा क्या कर? राइट. सी, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कम्युनिकेशन को डीप में जाकर के समझना होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन, वेदर थ्रू वर्ड्स और थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज और थ्रू योर वॉइस. वॉइस का बहुत बड़ा रोल है. स्टडी भी बताती है कि वर्बल कम्युनिकेशन का रोल सिर्फ 7% है. 93% इट्स ऑल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर वॉइस. Okay. 55% it is your body language. You speak with your body language. Okay. मुझे अभी भी याद है कि अमेरिका में जब बराक ओबामा लगातार 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, so there was a team और जिसको काम एक असाइन किया गया था कि आप जाइए और स्टडी कीजिए कि why he got selected twice in a row. लगातार 2 बार, ऐसा क्या था इनमें, क्या खास बात थी. तो उन्होंने एक 1400 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट कराई. तो उसको जैसे बोलते हैं ना, उसका एसेंस मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. एसेंस उस रिपोर्ट का ये था कि हिज एबिलिटी टू स्पीक ऑन द बीट. अगर 1 लाइन में उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ा जाए, उसका अगर कंक्लूजन किया जाए तो इट वाज हिज एबिलिटी टू स्पीक ऑन द बीट. व्हाट डज इट मीन? कि जो कुछ वो वर्ड्स के थ्रू कन्वे कर रहा है लोगों को, द बॉडी लैंग्वेज, द वॉइस, द इमोशन, द फेशियल एक्सप्रेशन,
everything was in line with the thoughts, in line with the ideas, in line with the words. तो इसलिए जब भी आप किसी के सामने कम्युनिकेशन को यूज करके अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑलवेज मास्टर दिस आर्ट ऑफ स्पीकिंग ऑन द बीट. अब किसी को बोलना है कि यार तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ. एक बंदा विदाउट बॉडी लैंग्वेज की लाइन बोलता है, तुम जाओ यार, मैं देख लूंगा. उसको जाएगा तो कहेगा झूठ बोल रहा है. ऑन द अदर हैंड, अगर बंदा हाथ लगा दे, मैं बैठा हूँ, 2 बार टैप करने से उसको यकीन आता है, डिफरेंस आ जाएगा. डिफरेंस आ जाएगा. सी, today the corporates are teaching their employees how to shake hand, how to smile, everything. But until and unless you have a feeling to serve, the desire to serve your clients and customers, for how long can you keep a fake smile? Moreover, people can see through fake smile, and it's more irritating. वो जल्दी क्या नाम निकाल, तो पता चल जाता है that is fake or real. Absolutely. तो first you got to be natural, and you got to have that sense of serving. आप किसी भी एजेंडा से आप किसी इंसान से मिलते हैं, obviously there would be an agenda, और उसमें first of all you got to be honest to your profession, and you got to have the feeling of serving, and not just like portraying that yes I'm there, I'm polite, this and that. तो इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है द कोर कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन. डीप इनसाइड आप क्या सोचते हैं, आपको सर्व करने का इरादा भी है कि नहीं. until and unless you have that that feel inside, you cannot have that influence. उसके अलावा और चीजें हम करें भी तो फेक लगेंगे. फेक लगेंगे. पीपल आर क्लेवर इनफ दीज डेज. सोशल मीडिया से इतना कंटेंट आज हम कंज्यूम कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज क्लेवर इनफ, दे विल क्विकली गेट इट. So sir, next question is 70% of the Indians are not well versed with the spoken English, whether it is vocabulary, grammar, pronunciation. One moderate level English spoken person is communicating with another in tutti-frutti English. Right. उसे पता भी है कि वो इंग्लिश बोलते हुए बहुत सारी मिस्टेक भी कर रहा है. तो क्या ऐसी सिचुएशन में उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर इंग्लिश छोड़कर he should start in mother language? Tutti-frutti English we call in our industry broken English. मैं अपने ट्रेनिंग्स को ये बात बता रहा हूँ कि see, broken English is the gateway for fluent English. Okay. तो जब भी आप बोलने का ट्राई करते हैं, see, sooner or later मैंने ये बात रियलाइज की कि भाई everybody started with this tutti-frutti English, even you and I. Yes. If we go back few years, we started with this tutti-frutti English because we are not native speakers. तो अगर अब हमारे पास 2 ऑप्शन होती है when we start speaking tutti-frutti this broken English. Now we have 2 options as you mentioned. One, quit and switch to your mother tongue. 2, you carry on with the same broken English. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ यू आर स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश, तो एक माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए. कई बार लोगों को लगता है कि यार मेरी इंग्लिश आई एम नॉट दैट फ्लुएंट, मैं ब्रोकन इंग्लिश के साथ पीपल विल मेक फन ऑफ मी एंड ऑल. नहीं, इस तरह की जनरली सिचुएशन आती है. फ्रेंड्स, फैमिलीज, इवन किसी क्लाइंट से आप मीटिंग कर रहे हैं तो अंदर से फील आता है. तो ऐसी केसेस के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू माइंड सेट शिफ्ट. अब उसमें क्या होता है, देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ. अगर बीच सुनसान रास्ते पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, इट नेवर मीन्स यू हैव अ बैड लक, इट ओनली मीन्स यू हैव अ कार. तो अगर गाड़ी खराब होगी तो पीपल जनरली किक देयर कार, मेरी किस्मत खराब है. नहीं भाई, आपके पास कार है, यू हैव अ कार. सिमिलरली इफ यू स्पीक ब्रोकन इंग्लिश, इट नेवर मीन्स यू आर पुअर एट इट, इट मीन्स यू नो अनदर लैंग्वेज. अदरवाइज ब्रोकन फ्रेंच बोल के दिखाइए, ब्रोकन स्पेनिश बोल के दिखाइए. आपको दूसरी लैंग्वेज का आइडिया तो है, कम से कम आइडिया तो है, एटलीस्ट यू हैव अचीव्ड सर्टेन लेवल इनटू इट. आपकी जो मदर टंग है वो तो आपको अच्छे से आती है. आप तो दूसरी लेवल में अपना एक लेवल बना, दूसरी लैंग्वेज में एक लेवल. Quitting will never help you. Quitting will never add fluency to your broken English. It is the only way that you carry on with whatever little knowledge you have, और उसको कंटिन्यू करते and gradually you would start finding the words, and the more expression would start striking your head, and ultimately you will find your flow. Okay. So audience, you got your idea that you should continue with your broken English, or we can say tutti-frutti English, while you're speaking any of the language, right? This was not completed yet. There is a lot more to learn in the upcoming episode of this Career Talk series. So stay tuned with Career Jaano.